Hello students, good morning to all of you. Students, today we will learn about some conceptual problem based on magnetic effect of current for current carrying conductor. Okay, so in first problem we have a conducting wire having current A to B, and secondly we have a circular loop having current anti-clockwise. Okay, the current in both is same, and due to the loop of radius r, the magnetic field is calculated at the center of the circular loop. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज हम इसको देखते हैं. सो प्रॉब्लम नंबर 1, and its solution. Okay, so here we have a current carrying conductor, or at the center we need to calculate the value of magnetic field. For this हमने ये रिजल्ट निकाला था phi1 phi2 at point P, the magnetic field. अगर ये सेंटर पे है और then this field we calculate in the situation is magnetic field for, इसको हम magnetic field B कह देते हैं, ठीक है, और इसके लिए magnetic field B1, this is for loop is B2. so B1 हम यूज कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R. क्लियर? और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R. ओके, दिस. एंड फॉर द loop, for loop of radius R having current I, we discussed in Biot-Savart law, the magnetic field is given by this is mu naught I upon 2R. Okay, तो ये दो situations हमारे पास हैं, and the direction of magnetic field and the due to the current carrying straight conductor or current carrying circular coil. We discussed that the direction is determined by using the Maxwell right hand screw rule or Maxwell right handed thumb rule. So according to those two rules, the magnetic field for a straight conductor like this, when in the case of a straight conductor, the magnetic field is given by the thumb, and the current moving in the straight conductor is given by the thumb, and the direction of magnetic field or field pattern of magnetic field is given by the tip of the curl of finger. So if in this situation the current is moving from A to B, so we set our thumb in direction of current, then it will give the direction of magnetic field, because current is moving this, so thumb is indicates the direction of current. So thumb in the direction of current, so we will observe that the magnetic field is going outward. Okay, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसका आएगा, दिस इज आउटवर्ड, दैट इज गिवन बाय अ पॉइंट. ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. And for the current carrying conductor in the form of circular loop, curling of finger gives the direction of current, and the thumb
gives the pattern of magnetic field lines around the circular coil. So this is direction of current and the magnetic field is outward. For this, the magnetic field also outward from the plane of paper. Therefore, magnetic field for wire AB is outwards. And student, two things: outward field, magnetic field, is taken as positive and inward magnetic field is taken as negative. So our case, the field is in both the case is outward. So the magnetic field due to wire, that is BA1, B1 is equal to mu naught upon 2 pi I upon R. This is first situation. And second case is magnetic field due to circular coil. Magnetic field for circular coil having current I, is given by B2 is equal to, this we say as positive, and now B2 is equal to positive, and at the center is mu naught I upon 2R. Clear? Now the total field at center due to both circular coil and the conductor. Total magnetic field at O is B is equal to B1 plus B2, that we get mu naught upon 2 pi I upon R and plus mu naught upon I upon 2R. Now from here mu naught I to R is common, mu naught I to R is common, and we get in the bracket is 1 upon pi plus 1. Okay, this is the resultant field due to the both situation. Okay, so this is for the clockwise direction. अगर हम इन स्ट्रेट कंडक्टर करंट को B to A फ्लो करेंगे तो ये इनवर्ट हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस एंड रेस्ट. And if we change the direction in place of conductor in the circular coil as for, ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और इनवर्ड फील्ड हमें मिलेगा, वो मिलेगा हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए. ठीक है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं क्लॉकवाइज तो फिर से यहाँ पे सेम सिमिलर चेंज आएगा. जस्ट कॉपी दिस. Okay, next problem we have
प्रॉब्लम 2, इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेते हैं, डेट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और सिंपली इसको लिख लेते हैं 4 पाई एंड हियर इज 2। एक जब हम सर्कुलर कोइल के लिए निकालेंगे ऑफ रेडियस आर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, और या फिर म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 आर ये होता है। और अगर एक सर्कुलर कोइल हमारे पास हो, उससे एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, तो ये वाला जो फील्ड आता है वो हमारे पास होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2, दिस डिस्टेंस इज x and this is a, this one is r, so this is x square plus r square a square is 3y, ये कुछ रिलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 2, that we have this is a situation A, B, C, D, E। ये एक हमारे पास दूसरा सिचुएशन है जिसमें करंट फ्रॉम A I फ्लो कर रहा है इन द सर्कुलर कोइल, अगेन करंट I, एंड इन दिस पॉइंट द करंट इज I इज फ्लोइंग। नाउ अब हम इस वाली सिचुएशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज A to B part 1, B, C, D part 2 and D to E part 3. Okay, so the magnetic field due to this situation is calculated at 3 portion. Now for this case ये हमारे पास हाफ सर्किल हो जाएगा, and when we join this is point D, तो ये हमारे पास 3/4 पोर्शन ऑफ द सर्किल एंड दिस एंगल इज 90, डेट मीन्स ये एक पार्ट बनेगा, तो रेस्ट पार्ट हमारा कॉइल से लिंक होगा। एंड नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर दिस। तो थोड़ा सा सिचुएशंस को समझते हैं। द करंट इज मूविंग in the direction O and we need to calculate the magnetic field at the center. Just problem, find magnetic field at center in the following figure, at center O in the figure given. Okay, now for solution देखिए, for straight conductor अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें सेंटर पे निकालना हो, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला इसमें हमने निकाला हुआ है, डेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला। अगर हमें यही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जैसे कि ये सिचुएशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारे पास एट दिस पॉइंट द सेम एंड द करंट इज ऑल्सो मूविंग इन द वायर। इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ फाई 1 इक्वल टू फाई 2 एंड इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ड्यू टू दिस सिचुएशन व्हेन द करंट and magnetic field in the same direction need to be calculated due to the straight conductor। ठीक है, दिस इज नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमें
for a straight current carrying conductor, we need to calculate the magnetic field in the direction of flow of current. The value of B is 0 for this case. Okay, now I am writing here also magnetic field due to wire AB, okay, B1 is 0 because direction of magnetic field and current element dl is same, hence theta is equal to 0 degree. For this situation magnetic field is 0 according to Biot-Savart law also. Okay, now the second situation. Second, the magnetic field due to loop B C D. Okay, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, डेट इज B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R एंड थीटा अपॉन 360. Here the theta is 270 and this we have, so B2 is equal to म्यू नोट अपॉन 2RI एंड अब हम यहाँ पे वैसे तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, तो ये लगती है 270 एंड 360. दिस वी सॉल्व दिस. B2 इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R 3/4. दिस इज magnetic field due to the loop. Okay, now listen here. The current is moving anti-clockwise direction. Okay, ये है direction of current. So अगर direction of current anti-clock है, we find from here the magnetic field is outward. Okay, so B for this is outward. So this value is positive. And third situation which we have, magnetic field due to the straight wire DE and the current is here, so magnetic field is again outward for this. Okay, now we calculate the magnitude for a current carrying conductor. Magnetic field at any end, okay, suppose this is D and this is E. सो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड O पे कैलकुलेट करना है तो ये सिचुएशन हमारे पास होगा. सो दिस इज 90 एंड दिस विल बी 0 एट E. देयरफॉर phi1 is 90 degree and phi2 is 0 degree for this situation. Therefore by using this formula we get this value is 0 and this is 1. So the final result which we get is this. At any end. One minute. Current carrying I this and we get the result is for this B is equal to म्यू नॉट, ये हमारा सिचुएशन है, म्यू नॉट अपॉन 4πI अपॉन R. ओके, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B3 फॉर द करंट कैरिंग वायर एट एंड D, that is म्यू नॉट अपॉन 4πI upon R and the field is outward, so direction is positive. Now the total field at the center for this figure, total field B is equal to B1 plus B2 plus B3, that is 0 plus
म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 8 RI प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4, ओके, that is B is equal to mu naught I upon 4R is common and we get 1 upon 2 plus 1 upon pi. This is the field for this situation. 1 minute, 3 भी बच रहा है, yes, this 3, so 3/2 कॉपी दिस। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये हम अपनी सिचुएशन से ले रहे हैं, रिजल्ट यहाँ है आपका। ओके, एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, डेट for a circular loop okay, this is center and the distance of this is 1 meter, okay, the coil has radius R and this R is equal to pi by 10. Oh, 1 minute, 10 pi meter. This is the value of R and this is 1 meter from the center, and for this we need to calculate the magnetic field. So this is first case, we say B1 for this situation. This is our second case, we say 2, and for this magnetic field is B2, and this is the last case, we say 3, and magnetic field for this is B3. Okay, now just we understood about the value or direction of magnetic field due to this situation. Okay, so if the current is moving downward, so we apply our thumb in the direction of current and curling of finger this. So we observe that the magnetic field is outward for this case. This is outward magnetic field, that is B is positive for this situation, and here the current is moving in clockwise direction, I is clockwise. Okay, तो अगर I clockwise है तो हम ये हमारी डायरेक्शन देगी
करंट की, तो हम यहाँ से करंट की डायरेक्शन को बना लेते हैं दिस, ये हो गया, ये हमने यहाँ पे सेट किया इस तरह से डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर ये, तो हमें डायरेक्शन जो मिलेगा वो इनवर्ड मिलेगा। फॉर दिस केस वी से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड डायरेक्शन फॉर B2, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एंड अगेन फॉर दिस केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड B is outward, so for outward direction we show it by a point in the circle. So these are the directions of current. Now we calculate the result for the situation B1, B2 and B3. Find B for given figure at center, okay, center O of the coil. ये हमारी सिचुएशन है। फॉर दिस फर्स्ट पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सी A, B, C, D, E, F. So magnetic field due to wire AB, due to wire AB is B1. This B1 is equal to distance from the wire is 1 meter, so it is at center, so we say mu naught upon 2 pi I upon R, because it is outward so it is positive, and R we have 1 meter, R is equal to 1 meter, therefore this B1 is equal to mu naught upon 2 pi I. This is first situation. Second we have magnetic field due to current carrying circular coil, okay, that is B2. So circular coil have radius 10 upon pi, so the result is mu naught upon 2 I upon R, and we have for this situation ये R1 हो जाएगा, this is R2. R2 we have 10 pi meter. By using this we get the result is B2, and it is inward, so negative, minus mu naught 2 and I upon 10 pi. This pi multiply, that is B2 is equal to minus mu naught pi I upon 20. 2 into 10 is 20. This is second situation. And the third situation is magnetic field due to wire EF, okay, because the direction of magnetic field in the direction of magnetic field in the direction of the we need to calculate at center, तो B और DL का जो एंगल बनेगा फॉर दिस केस इट इज 0, सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ दिस P3 is 0 because in direction of center, in direction of current element, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
therefore net field B is equal to B1 plus B2 plus B3. This is by putting all values. B1 is positive, mu naught upon 2 pi into I, and this field is negative, so minus mu naught pi I upon 20. And next is 0. Now by calculating mu naught I upon 2 as common, mu naught I upon 2 as common, we get the result is 1 upon pi minus 1 upon pi 1 minute ठीक है, 1 upon pi minus pi upon 10. This is the result for this situation. If student we multiply here 2 and taken pi as common, so the result will turn to okay. So this is your result for this situation. Thank you. Students, for this question it is given us that pi square is equal to 10. अगर पाई का वैल्यू पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 है, on taking pi as common from here we get b is equal to mu naught I upon 2 pi. Pi is as common, so this will become 1 minus pi square by 10. So we have the value of pi square is 10. By using pi square is equal to 10, we get b is equal to mu naught I upon 2 pi 1 minus 10 by 2. This will become 1. So mu naught I upon 2 pi is 1 minus 1 is become 0. Therefore the field at center due to this figure is 0. Thank you. अगर हमें पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 गिवन नहीं होगा तो रिजल्ट हमारा यहाँ तक रहेगा, बट इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन, जो भी यहाँ पे सिचुएशन बनेगा उसकी वैल्यू अगर गिवन करता है, द फाइनल रिजल्ट इज 0 फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. थैंक यू. So student, this is how we will calculate the problems or conceptual problems related to the current carrying conductor